इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? मेडाक। हाँ, सारे एपिसोड ऐसे शुरू हो रहे हैं ना। तो आज की स्थिति ये है, ये ग्राउंड को आपका क्या वीडियो बोलते हैं? ऑफ हो गया है। हाँ हाँ, ये है मैंने भाई। मुझे लगा थोड़ा प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए, थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग सेट करके। प्लस अभी मेन कुछ एक दो चीजें और रिकॉर्ड करनी थी तो। हाँ भाई, भगवान करे मेडॉक का 6-7 स्टूडियो हो भाई। स्टूडियो नहीं चाहिए भाई, हॉस्पिटल चाहिए। अभी सॉर्टेड है क्या लाइट? हाँ हाँ, लाइट लाइट पहले भी सॉर्टेड ही थी। यस, बताइए सर। बताइए, क्या बेच रहे हैं आजकल आप? क्या बेच रहे हैं? कन्वीनियंस, इंटरेस्टिंग, इलैबोरेट। सिंप्लिसिटी। सिंपलिसिटी तो यार तो मेरा कॉपी पेस्ट कर रहा है। चलिए देखा जाए ना, लाइक मल्टीपल लेवल पे मल्टीपल चीजें बेच रहे हैं एक्चुअली। अगर हमारा बस एचआर बस हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, तो वो टाइम पे हम लोग बोल सकते थे कि मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेच रहा है, सब हम लोग टाइम सेव कर रहा है। एक्चुअली देखा जाए, जब हम लोग मिडॉक की बात करते हैं, मिडॉक मल्टीपल लेवल पे इंटीग्रेट करके, तो वो लाइन पता है हम लोग जो हॉस्पिटल्स को देता है कि मिडॉक, आपको मिडॉक के हिसाब से एडजस्ट नहीं होना है, मिडॉक आपके हिसाब से एडजस्ट होगा। वो लाइन बहुत चल रही है मार्केट में, पता है? वो तो है। दैट इज लाइक रामबाण, फेंक दो। हम्म। सही है, चलो एपिसोड शुरू होते ही बेचना चालू। हाँ, जरूरी भी है। हम्म। तो ओवरऑल जब हम बात कर रहे हैं ऑफ योर जर्नी एट Medoc, that is what this episode is mostly about. It is about the collaborations that you have had here, the work that you have done here, and the impact that you've got on the table. When we talk about in a casual, normal environment, जैसे हम नॉर्मली बैठ के बात कर रहे होते हैं, नॉर्मली जैसे चीजें चल रही होती है पूरा chaos के बीच में, although it's a very rare thing that we are actually sitting इतनी शांति से, given the last 2 months. So द लास्ट 1.5 year। या no, the last 2 months में जो इतना heavy chaotic सा सीन चल रहा है with heavy acquisitions happening all of a sudden, and जो पिछले 1 साल से scale up चल रहा है वो तो है ही, but now that we are done with all uh, basic चीजें, and now that we're getting bigger hospitals, better hospitals, more collaborations, more partners on the table, more labs on the table, more insurance companies on the table, and you've been behind all of these things. So how has your experience been this entire 2 years, 1.5, 2 years? I still remember meeting the whole core team of Medoc, and it was actually, I was meeting my juniors. So वो नहीं होता, एक 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 फिगर होता है कि हाँ हाँ बस अभी एक्विजिशन तो सॉर्टेड ही है। So I still remember meeting you in the office, you just letting me know about the current situation, letting me know कि Ritesh, Medoc is just, as of now, is just about hospitals. From there to bringing the hood on table, bringing the whole B2G wala perspective on the table, letting me know about your future plans, and aligning the both of our interests towards the vision and mission of the company. So journey has been quite tedious. Apart from it, journey has been quite interesting as well. So A lot of times क्या होता है कि लोगों को लगता है कि getting a partner on the table mm, in any company, it's a matter of days.
हम्म। इट्स अ मैटर ऑफ ऐसा कि एक जना अच्छा लगा, उसके साथ काम करना चालू करा, एंड देन एक दो दिन बाद पता चलता है अच्छा दिस पर्सन इज अ पार्टनर। एंड बिटवीन यू एंड मी वी नो वन थिंग कि you have earned your position here in every single way, be it with respect to the हम्म। number of acquisitions you've done, or be it with respect to the time you've dedicated, the nights you've dedicated in the office, um, to you know to the Actually, balconies and everything. so it has not just been a year or two. If we just, include the days and the nights, so, that. ऐसे तो ऐसे तो डबल खर्चा होने वाला है पूरी पूरी टीम की तरफ से। हर सुबह महीने से 2 महीने की हमें, सैलरी जा रही है। हाँ। क्या कर रहा है रात में मालूम पड़ रहा है। हाँ, अरे कुछ नहीं यार, फार्मा कंपनी को एक ये चीज पिच करनी है। अ, अरे क्या हो रहा है। रात को 2-2 बजे कॉल आ रहे होते हैं, एंड इट्स लाइक पूरा दिन तो एक्विजिशन बिजी होता है, उसके बाद फिर रात को 12 बजे घर पहुंच के कॉलिंग, एंड उस टाइम पे मेरी खुद की ऐसे हालत खराब हुई पड़ी होती है कि चलो पूरा दिन निकल गया, अभी सुबह उठना है वापस 6 बजे, एंड फिर कॉल आ रहा है 12 बजे, कॉल खत्म हो रहा है 3 बजे। और इंटरेस्टिंगली ना, मेरे कॉन्टैक्ट्स भी ऐसे ही है यार, मतलब आई जस्ट गिव देम अ कॉल। हाँ भैया ये काम है, या लेट सपोज, हाँ जी सर ये काम है। ठीक है रितेश, आप भेज दीजिए। आप एक काम कीजिए, आप कल मीटिंग के लिए आ जाइए। और पता है बंदा कहाँ बैठा होता है? बंदा बैठा होता है दिल्ली में, बंदा बैठा होता है इंदौर में। एंड दे आर सेइंग आ जाइए कल ऑफिस में, आ जाइए ना, करते हैं ना मीटिंग। फॉर कॉन्टेक्स्ट पर्पसेस तो अभी रितेश इज इन मुंबई। हाँ, तो कल सो रात भी यही हुआ। हाँ, कल रात तो चलो दैट वाज अ वेरी एक्सेप्शनल सा केस एज वेल इन लॉट ऑफ वेज, बिकॉज इतना तो नहीं होता यूजुअली, इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन आती नहीं है। There were too many things and too many agendas and too many pointers to discuss about. What I want to discuss about is the general way of working, and what exactly is market ka current temperature. And for somebody who's watching this episode, for somebody who's streaming with us here, they will want to actually understand कि अभी इस टाइम पे, for somebody who's going every single day market में, जो रोज मार्केट में आप देख रहे हो कॉन्वर्सेशन चल रही है, ओपनिंग्स हो रही है, क्लोजिंग्स हो रही है, दूसरी कंपनीज है, कंपटीशन है, हर रोज कुछ ना कुछ आता रहता है लिंक्डइन पे। So what is the temperature of the entire market? What is going on? What is the trend? What do we have? B2B, B2C के अलावा भी चीजें हैं। So that is where we want to actually emphasize Do you on. remember, do you remember Anupam Mittal commenting on our market? Like we're trying to boil the. एडिट So करवाना करना पड़ेगा इस एपिसोड को। so quote unquote, जो भी अपन स्टैंड अभी लेके बैठे हुए हैं, राइट, या जो भी अपना स्ट्रैटेजी है विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन, या जो भी अपना वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स है, it is creating a lot of ripple in the market as of now. uh, just consider any state, like from northeast Arunachal Pradesh to till down, like Kerala, cities like Karnataka, sorry, cities like Bangalore and Chennai. In every specific states we have a team deployed over there. That may be through direct team of the Medoc, which is deployed by us. That may be with any of our partner. The point is, जो हिसाब से हमेशा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसके पीछे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं। और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए वी क्रिएट आउट अ सॉल्यूशन। बट जो इंडस्ट्री में हम हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू टेक इज वेरी डिफरेंट। हम्म। तो हर एक परसेप्शन पे अपने प्रोडक्ट को सही प्रूव करना इज वेरी डिफिकल्ट एट मेनी डिफरेंट लेवल्स। सो फॉर एग्जांपल, कुछ हॉस्पिटल्स हैं विच आर नॉट owned by doctors. So there are corporate hospitals. There are some hospitals who are run by some individual, which is not a doctor. So उसके expectation fulfill करना, उसके expectations ये होते हैं कि भाई HR cost कैसे reduce हो, और टेक का कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो, डॉक्टर्स कॉस्ट सेविंग वगैरह वाला पार्ट। वेरेन जब डॉक्टर एक ओनर होता है, सो देर इज अ वेरी डिफरेंट परसेप्शन ऑफ द टेक फॉर हिम। उसका परसेप्शन ये रहता है कि भाई प्रिस्क्रिप्शन डिजिटलाइज हो रही है नहीं हो रही है,
एक डिस्चार्ज समरी बनाने में कितना टाइम लग रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बेसिकली हर एक लेवल पे, हर एक इंस्टीट्यूशन को और हर एक मेंटालिटी को सेटिस्फाई करना इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग एक्चुअली। और वो लेवल पे अपनी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, फ्रॉम टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ द डॉक्टर डे इन एंड डे आउट to actually figuring out what is the actual core problem that every doctors have, then aligning Medoc towards the solution of those problem statement. So अभी अगर हम लोग करंट मार्केट का टेम्परेचर बात करें, सो मार्केट बहुत गर्म है, क्योंकि एबीटीएम का जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एम निकाला हुआ है, दैट इज with respect to insurance as well and with respect to digitalization wala part as well. So obviously there is a certain requirement in this specific sector, but the point is कि जो हिसाब से हमारा strength रहा है, we have aligned that towards the pain points and the gap as well. We have addressed gaps of the market in a very fantastic way. So हर एक region में we have regional competitors, and हर एक state में we have competitors in specific cities as well. For example, Hmm. agar there is some XYZ competitor in Jaipur which doesn't exist anywhere in India. There is one competitor who is doing a great job here in Mumbai, but they don't exist anywhere in India. Like if you consider any other tier one city. So मतलब खुद को ऐसे पोजीशन करना कि यार वी आर टैकलिंग टू पैन इंडिया एंड टैकलिंग टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कॉम्पिटिटर इन अ वे कि हम लोग बता पा रहे हैं कि एक्चुअली में यार हमारे पास में फीचर्स है, वी आर जस्ट नॉट सेइंग फॉर द नेम से कि हम लोग सुपीरियर है। लेट्स सपोज वी हैव सम सर्टेन फीचर्स जो कन्वीनियंस ज्यादा दे पा रहा है। सो दैट इज द इंटरेस्टिंग चीज, दैट इज द इंटरेस्टिंग पोजीशनिंग दैट वी हैव टुक। इसमें पता है बहुत इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब हम स्टार्टअप कोई भी शुरू होता है तो हम्म इनिशियली एक कंपेटिटिव एनालिसिस किया जाता है कि हम्म आइडिएशन लेवल पे चीजों को क्लियर करने के लिए यू पिच इट इन मल्टीपल प्लेसेस एंड देन पीपल आर लाइक कि यू हैव XYZ कंपटीशन एंड ऑल ऑफ दैट व्हाट इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन, यूएसपीज। पर जब तक मार्केट में उतरते नहीं हो तब तक पता नहीं चलता कि एक्चुअल में उन चीजों की वैल्यू क्या है। सो दोस हम्म क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड बैक देन when you get into the market and then those questions are again asked from the हम्म market itself, that is when those questions actually start making sense, and that is when the questions actually start, you start getting real answers for them. तो जब हम कंपटीशन की हम्म बात करते हैं, आई रिमेम्बर जब when we started we were like कि only real competition that we have is paper, क्योंकि क्योंकि पेपर के साथ जितना अटैचमेंट है हम्म डॉक्टर्स का और जितना अटैचमेंट है हॉस्पिटल्स का, वो और सिर्फ हॉस्पिटल पेपर हम्म इसका ही नहीं, इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इवन गवर्नमेंट का भी एज अ वेरी इन अ वेरी रियल नोट जो मुझे बात करनी भी है, इंश्योरेंस कंपनीज के रिगार्डिंग इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट होने के रिगार्डिंग पेपर इज given so much importance, signatures and handwritten content is given so much importance. So that is something that I want to actually highlight on. But before that, I would love to understand competition के साथ when you go in the market and then people are like कि uh, for example यहाँ पे तो प्रेस्को चल रहा है, तो then when you look into the actual suite that they have and when you look into what they're actually building and then we see all the other things that are in the market, so how do you हम्म। actually wrap your heads around the fact कि you are being compared with something which is so different, for a lack of better word. बोले यार ये चीज का पता है, लाइक आई जस्ट गिव देम द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ मिडो। सो फॉर एग्जांपल एनी विच वेज मेरे पास में एक बैग होता है, वो बैग में एक लैपटॉप होता है, वो लैपटॉप में मिडो। So uh, when they compare to the features that Fresco have and the features that Medoc have, सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है ना कि जितने भी फीचर्स कोई और कॉम्पिटिटर में हो ना हो या अपने पास हो ना हो, इफ यू कंपेयर द एक्चुअल यूजेबिलिटी ऑफ दैट फीचर, बहुत कम बारी ऐसा होता है कि जो फीचर्स कोई कॉम्पिटिटर में है दे आर फुल्ली यूटिलाइजिंग दैट। true. वेयर एज तो आपके पास में अगर प्रिस्क्रिप्शंस है और सारी चीजें बहुत सिंप्लीफाइड वे में, फॉर एग्जांपल यार लेट्स कंसिडर नॉर्मल एप्लीकेशन जो डे इन डे आउट में लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज इंस्टाग्राम। वो केस में पता है आप कभी भी देखते हो एक फ्रंट फ्रंट तो आप पैनल देखते हो राइट, उसमें वही रील्स है, सर्च करो एंड देन योर अकाउंट एंड ऑल द बेसिक थिंग्स दैट इज एट द फ्रंट ऑफ द थिंग्स। जब आप सेटिंग्स में जाते हो ना, देयर आर मल्टीपल
features or multiple settings that you can actually touch. You can see and you can feel the difference, but you know कोई उतना मेहनत करता नहीं है. That is what, and that is where the difference lies. So अगर हम अपना फाइनेंस वाला मॉड्यूल देखें, अगर हम अपना HRMS वाला मॉड्यूल देखें, या ओवरऑल इन टोटालिटी हॉस्पिटल इकोसिस्टम देखें एच प्लस के थ्रू, तो यार चीजें बड़ी सिंप्लीफाइड है. मतलब यू नो सिंप्लिसिटी इज द वन थिंग दैट पीपल केयर. उसके अलावा जो हम लोग एड ऑन यू नो वैल्यू प्रोपोजिशंस रखते हैं कि आपका पूरा का पूरा LIMS हम ऑटोमेट करे रहेंगे. हमारे एप्लीकेशन, और ऐसा ये जो स्पेसिफिक चीज अभी जो मैं बोलने वाला हूँ, ये कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा. दैट इज हाउ यू कैन मेजर द LTV of an patient that is coming to your hospital via some tool that is, you know, as of now वो कोई measure है ही नहीं. They have to actually sit and you know do the calculations to calculate the LTV of a patient, or the you know of the value propositions with respect to the convenience that they are giving to the patient. जब हम हम्म ये बात करते हैं तो के थ्रू बहुत इजीली वो लोग पता सॉर्ट कर रहेंगे. हमने लैब्स को भी स्विगी जैसा बना दिया. जब आप स्विगी पे ऑर्डर करते हो, so you know you see actually what is being done with your order. In the same way LIMS में कैसा अपना, if you open the whole me वाला application, तो वहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि ठीक है मेरा खून अभी गया है, मेरा खून अभी टेस्ट हो रहा है. और ये हाँ चीज पता लिटरली मैंने जब यहाँ पे यू नो डॉक्टर यहाँ पे एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स है. So I went into an one good hospital. So वहाँ पे I was waiting for my meeting actually. Usually I'm a bit late for the meetings, but वो hospital में मैं जल्दी चला गया. Then I had few conversations with the patients. So जब वो conversations हुई, then it was quite interesting कि you know people are actually ready to opt in for such uh, you know change. हम्म इनसे जो दो तीन चीज बहुत ज्यादा रिपीटेटिवली वो पूछते हैं ना लैब वाले को, या लेट सपोज हॉस्पिटल को, कि लाइक मेरा मेरा रिपोर्ट कब आएगा, या लेट सपोज कोई एक या फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, यार तेरा एग्जांपल ले लेते हैं. वी ट्रैवल अ लॉट है ना, डे इन एंड डे आउट पे हम लोग बाहर ही रहते हैं, या हम लोग सिटी के बाहर रहते हैं, घर पे यूजुअली बहुत कम आते हैं. इन दैट केस अगर लेट सपोज लाइक यू नो टचवुड हो ना, अगर लेट सपोज मुझे कुछ हो गया and I'm being you know admitted, or maybe I'm hospitalized at one specific hospital outside my city. So in that case, friends and family can view my view my health conditions in the real time. कि भाई actually अगर let's suppose मेरा cardiac arrest अगर मुझे आया है, so what specific things have I been administrated with? What is my basically the current? entirety Yeah. of your health in one single place, so it makes it easier for the patient as well. बट जब हम लोग बात करते हैं अभी इस टाइम, पहले अगर हॉस्पिटल लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे इस चीज को, तो यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन वन सिंगल प्लेस, यू डोंट हैव टू यूज एनी अदर एप्लीकेशन. बट जब इसका हम लोग एक क्रॉस देखते हैं, जब हम लोग जैसे हम लोग जब मार्केट में एंटर हो रहे थे, एंड व्हेन वी वर 6 months बाद, 6-7 months बिफोर, जब कुछ हॉस्पिटल्स हमारे पास इनिशियल थे, एंड वी वर लुकिंग एट एक्सपैंडिंग थिंग्स फॉरवर्ड फ्रॉम चंडीगढ़ एंड फ्रॉम पंजाब, एंड उस टाइम पे द काइंड ऑफ रिक्वेस्ट दैट वी गॉट फॉर द प्रोडक्ट, जैसा अभी यू सेड ना, स्विगी लैब्स को स्विगी बना दिया, वैसे ही हम लोगों को रिक्वेस्ट सारी थी फॉर वेरी सीनियर पार्टनर्स इन वन ऑफ द मोस्ट इनिशियल हॉस्पिटल्स दैट वी ऑनबोर्डेड. दे हैड दिस थिंग दैट दे वांट देयर एंटायर ओपीडी टू बी लाइक मैकडॉनल्ड्स, कि कोई भी पेशेंट आ रहा है, उसकी सारी रिक्वेस्ट एंड टिकट्स और सब चीजें उसको दिख रही है, जितनी पेमेंट हो रही है एकदम सीमलेसली हो रही है, द chaos नीड्स टू बी लेस, द पैनिकिंग नीड्स टू बी लेस, लाइंस जो है वो I still मतलब ठीक remember है. ये वैसे रिक्वेस्ट आती है, और जो टेक टीम में जो बोलते हैं ना कि यार हॉस्पिटल में केओस कम करना है, तो फिर पीछे से सुधांशु या यू नो अपना आयुष सीटीओ बोलेगा यार उनकी लाइफ में केओस कम हो रहा है, बट हमारी लाइफ का क्या. हाँ, अरे एंड क्रेजी चीज कि वो chaos कम करना इज वन थिंग, एंड जस्ट इमेजिन एन हॉस्पिटल, ठीक है, एंड हम बात करते हैं लाइंस बहुत लंबी है, ये वो सब चीजें, तो वो लाइंस लंबी क्यों है, उसके पीछे पूरा ब्रेनस्टॉर्म करना. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टेक, इट इज ऑल्सो अबाउट द हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन. यू हैव टू एक्चुअली टॉक टू द डॉक्टर कि वो लाइन लंबी क्यों हो रही है, एंड उसको छोटा कैसे किया जा सकता है, कि क्योंकि इट्स नॉट अ यूनिवर्सल थिंग, नॉट एवरी हॉस्पिटल हैज लॉन्ग लाइंस, बट देन देयर आर सम स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स जहां पे बहुत ही ज्यादा लंबी लाइंस हो रही है, जहां पे वेट टाइम बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है,
कि अगर अगर फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर आ रहा है 11 बजे, तो उसकी ओपीडीज 9 बजे से क्यों शेड्यूल हो रही है? दीज आर टफ कॉन्वर्सेशंस, but these are conversations which actually enhance the entire patient experience and increase the LTV of the patient, because given the good experience that they have with the hospital, the recommendations that they then take forward, the trust that is built, that is the foundation of everything. So when you go into a hospital हम्म, and उन्होंने already trust की बात हो रही है, क्योंकि they are already using something. Okay, they're using a software for, say, for example, 5 years, and then you enter that hospital and हम्म, you're like कि नहीं मेडोक लेना है। तो यूजुअली देख, मेरा पहला रिएक्शन तो यूजुअली यही हुआ करता था जब मैं when I usually go to sales and I go for all these pitching and everything, कि हमारा ऑलरेडी सिस्टम लगा हुआ है, कि हम चेंज क्यों करेंगे। आई हैव माई ओन आंसर्स, व्हाट इज योर आंसर यूजुअली एंड व्हाट इज द कंपनीज आंसर यूजुअली? यार मैं बड़ी सिंपली सिंप्लीफाइड वे में, जैसा मेडॉक का स्टैंड है वो मेरा स्टैंड होता है। सो मैं कुछ नहीं करता ज्यादा, आई जस्ट हैव द नॉर्मल कॉन्वर्जेशन। मैं इंट्रो दे दिया कि यार मेडॉक ने ये बिल्ड किया है। देन आई हम्म। आस्क्ड देम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि व्हिच HIMS और व्हिच मोड ऑफ डिजिटलाइजेशन आर यू यूजिंग, एंड व्हेन दे से अबाउट स्पेसिफिक प्रोडक्ट नेम, वो भलता ही कोई रीजनल प्रोडक्ट होता है, एंड जब रीजनल बोल दिया ना, दैट इज द चांस जहाँ पे वो क्लोज हो जाता हाँ। है। सो एक एक फीचर कंपैरिजन दिखा दिया। उसके बाद में जो एड ऑन वैल्यूज है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, उसके पास में अलग अलग हेल्थ टेक होते हैं, राइट? वो मेडी बडी में भी कंसल्टेशन देगा डॉक्टर, वो प्रैक्टो में भी देगा, अलग अलग जगह देगा। वही जगह पे मैं बोलता हूँ कि आप हमारे एप्लीकेशन पे आइए, मैं आपको सारी इंटीग्रेशन एक जगह पे देता हूँ। आपको आपको अपना डैशबोर्ड चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज द वन थिंग। दूसरी चीज, हॉस्पिटल ओनर को व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम द मिड ऑफ साइड इज यू नो the Medi loan facilities for the insurance companies, from the insurance companies. Then जो नॉन इंश्योर्ड पेशेंट्स हैं उनके लिए भी मेडी लोन एज क्विक एज 25-30 मिनट्स में। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स, वी आर आल्सो इन्वेस्टिंग इनटू हॉस्पिटल्स, जस्ट फॉर यू नो just to lay out the backgrounds, or just to lay out the whole picture of the conversation. यहाँ पे in the Faridabad as well as in Mumbai, we have started investing in the cath labs for the hospital. So that is the one thing. अपार्ट फ्रॉम इट, पेशेंट्स के लिए डायरेक्टली एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन जहाँ से उनको सारी चीजें मिल रही होंगी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या मालूम है? जब मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ तो एक ना एक डॉक्टर मुझे ऐसा मिलता है, क्या यार क्या प्रोडक्ट बनाया है, स्टेशनरी का पूरा खर्चा बच रहा है मेरा। सो स्टेशनरी से तो दैट, बहुत ज्यादा बचा रहे हैं। हाँ यार, मतलब यार उनको एक्चुअली। नाउ एक्चुअली जब बचाने की बात आए ना, तो वी हैव मेड ऑल दीज वेरी लॉन्ग स्प्रेडशीट्स, वी हैव डन ऑल दीज एनालिटिक्स ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स, कि उनका पहले कितना खर्चा आ रहा था, अब कितना आ रहा है। वो जो हमारा, वी हैव टेस्टिमोनियल्स, वी डोंट रिलीज टेस्टिमोनियल्स ना, बिकॉज पॉइंट नहीं बनता। इट्स अ थिंग वील डू स्लोली, वील शो हाउ द सिस्टम हैज चेंज्ड थिंग्स वंस, से फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल में 1 साल हो गया, एंड देन वील एक्चुअली मेक वीडियोस एंड ऑल। बट पॉइंट इज कि जब हम लोग बात करते हैं चेंज की एंड सेविंग की and collaborations key. Ritesh, you are not a salesman. You are here for collaborations. You're here for integrations. You work on all of these business aspect of things together. So, talking about business, talking about actual core business, what do you see? Where do you position Medoc with respect to the integrations and collaborations well aspect? Because I don't see ourselves competing with other HMS, because we've positioned things in this way. We are an hospital automation system. We are good with integrations. We want to play with collaborations, and the only real competition is people who don't want to collaborate. So, who's positioning के around, because it has taken time to build this positioning, and it has taken months to actually get that level of clarity कि market किस तरह की saturation हुई हुई है, क्या क्या हो रहा है, and tier 2 tier 3 में क्या चल रहा है, tier 1 में क्या चल रहा है, difference कितना है। सो इंडिकेशंस की बात करें तो टेक्नोलॉजिकली we are doing the integration with Google Health and Apple Health and all. Apart हम्म। from like IMS में we are in talks with companies like Omron, Siemens, जो basically रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों एंड पे काम कर रहे हैं। Apart from हम्म। it, when we talk about
competing or let's suppose collaborating with different health techs as well. जैसे मैंने example दिया था कि we are integrating with as many health techs as we can, जिनके पास में footfall अच्छा आता है, so that we can give the convenience to the lives of the doctor. That Deals is in the process, will not take names. apart from it. Interestingly, we have started the whole new uh, genre of business as well. That is with the pharma companies. Hmm. So with the coverage that we have right now, and with the insights that we have right now about the whole healthcare ecosystem, we are soon going to enter. I won't take any name. I won't take any specific name, but we are soon going to be collaborating with many pharma companies and many reputed pharma companies. Hmm. Obviously, that is the one part. Apart from it, yeah, integration के way में ना, health tech is a very very interesting space to be in. Hmm. And healthcare totally different space to be in. So जब हम लोग एक ब्रिज बना रहे हैं ना हेल्थ टेक और हेल्थ केयर में, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पिलर्स को एड्रेस कर रहे हैं, वो टाइम पे वी गेट इन अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट टू expand our offerings to different specific genres. For example, जो हमने एम्बुलेंस प्लस का जो मेडॉक प्लस का जो पैरामेडिक्स के लिए हमने फीचर बनाया. So I had a word with a leading company who deals with ambulance services, Hmm. air Hmm. ambulances and all. कि यार ये टेक हमें व्हाइट लेबल कर दो. Hmm. लेट्स दिस टेक आप हमें दे दो, हम रियल टाइम हमें भी अपने अपने बिजनेस मॉडल को स्विगी जैसा बनाना है. वी आल्सो वांट टू Hmm. give and And it measure is the LTV. important. In healthcare, it is important. We need the tech stack that is created with it, Medoc Plus. A lot of people are asking for it, for ambulance services and all, and it is very interesting how it works. So, and it is important as well. जितना level of analytics मिलता है, जितना level of information मिलता है, जितनी speed बढ़ती है चीजों की, it's important. So apart from it, we are having good number of integrations with in the BFSI segment as well, in the insurance and TPS wala segment as well. So we have hard word with many insurance companies. The head of IIDI, we when we shared the whole vision with the some specific person with the NIFI IO, he was very confident with this thing कि यार जो central government का जो aim है, cashless and anywhere cashless by 2020 2047, या जो digitalization जो उनको implement करना है, जो transparency implement करनी है insurance segment में, that is something where government can actually collaborate with Medoc. So this is a very huge, actually a huge statement from a government official to towards the startup. ये conversation मैंने करी थी 2 months back when I was on Uh, my tour, or at that time we were not actually focusing onto the acquisition that much. yeah. So that is the interesting space कि यार हमने जो बनाया है, just if we keep the sales and the numbers aside, अगर हम लोग वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करें या हम लोग उसकी यूटिलिटी की बात करें, so it is at a very different level and it actually works in a totally different scale. Hmm. So And it is, but again, coming to B2G, coming to insurance companies, digitalization is one thing which is very important. Okay, we understand that. We are implementing it. Uh, उसको हमने एक बहुत अलग तरह से पर्सपेक्टिव से रखा है. जब we'll be releasing the entire preview, live preview the 5th को, you'll even see that how it is happening. I think whenever if you're watching it after 5th of May 2025, you'll even see that live preview. उसमें हमने एक पर्सपेक्टिव रखा है of what digitalization is and what it isn't. And what we are doing, we are not just digitizing, we're also getting into the empathy and trust circles. But when we talk about B2G, when we talk about insurance, when we talk about how government operates, paper is one thing that they're not ready to let go. You think that it's a thing which is hampering? You think it's a problem? What is like right now? Because मेरा जो focus चल रहा है, जितनी हमारी डिस्कशन हो रही है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कि किस तरह से हम लोग कोलैबोरेट कर पा रहे होंगे, किस तरह से हम लोग चीजों को एक लाइन में लेके आ रहे होंगे, दैट पेपर वाला एस्पेक्ट इट ऑलवेज स्टेज इन. व्हाट इज इट अबाउट पेपर व्हिच इज सो व्हिच इज एक्चुअली uh, क्रिएटिंग द प्रॉब्लम हियर? it is not a problem.
सो जो हमने चीज बनाई है, दैट इज वेरी, जैसे मैंने तेरे को बोला भी था, आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हिपो चिप्स एज वेल. Hmm. 12 12 to 15 years back they launched the chips which was baked, not Yeah. not fried or not like that. उनका वो मोटो था. आज वो मार्केट बहुत ज्यादा उनके उनके हिसाब से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है. When you Hmm. are too early in the market, it is also a problem. जब वो प्रॉब्लम नहीं है, जब वो प्रॉब्लम किसी ने एड्रेस नहीं किया और जब आप उसका सोल्यूशन ले आओ, that is Yeah. that is a problem within itself. Yeah. So that is the one thing. Second thing is, जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन किया, लेट्स सपोज फ्रॉम ट्रांजिशनिंग फ्रॉम पेपर टू पेपरलेस वाला चीज, Hmm. डॉक्टर्स आर रेडी. नहीं है कि इट इज अ बिग वेरी बिग प्रॉब्लम. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि पर्सपेक्टिव कैसा है कौन से डॉक्टर का. सो इट वही. इज एक्चुअली नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी. फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये ट्रांजिशन हो रहा है, राइट, फ्रॉम अ फोन टू द विजन, एप्पल विजन वाला चीज, जहाँ पे यू आर नॉट एबल Hmm. टू टच, able to use the full usability of the phone within that goggles, or let's suppose that's that specific vision in pixels. बात करते तो टच एंड फील वाली जो बात होती है, लाइक अभी लेट्स सपोज हमारी एज क्या है, 25 26, एंड वही वही स्पैन पे, राइट. जब हम लोग लास्ट 20 years से ये फोन टच स्क्रीन यूज कर रहे हैं, एंड अचानक से अगर कोई बोल दे कि पुट दिस गॉगल्स एंड यू विल बी एबल टू यूज द फोन, तो वो केस में इट इज टोटली ड्रास्टिक चेंज है ना. Hmm. So it is a normal human behavior that we are trying to change. Obviously, convenience आ रहा है, but um, that Behavioral is a change takes human time. problem, not a you know not something else. Company, हाँ. उसके अलावा हाँ. उस उसको भी हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से एक्चुअली फिगर आउट कर रहे हैं. उसको भी अच्छे तरीके Exactly. से हम लोग सॉल्व कर. When it comes to voice, क्योंकि हमने बहुत सारे मेथड बनाए हुए हैं. We have scribe. You can just we give you a tablet. When you for any doctor, we give doctors a tablet, and then इसी type के tablet में ही you can write whatever prescription you want, and वो digitize हो जाती है. We have voice prescriptions wherein आपकी और आपके patient की जो conversation है उसके according it creates digital formats. We have 4 level OCRs available जो हमने in-house create करे हैं. We have normal templating and automatically learning that prescription. So the system learns how you write your prescriptions. After all of these things, it becomes the time to write a prescription is much lower than when you write it on paper. So ये चीज हमने observe करा है, calculate करा है, analyze करा है. And even with after 1 week of using, the doctor also becomes much more familiar with and much more comfortable with their systems. And it doesn't have to be a computer. It can be anything. It can be a phone because we are available on all devices. So ये जो seamlessness है डॉक्टर की, ये तो हाँ चलो, that's a very good pro. But then when you talk about IPDs, and that is where we actually, we created dynamic IPDs, and वहाँ पे जाके we had a lot of very interesting observations. So IPD पे हम आएंगे, but when you see the market अभी, and when you see around you, there is a company which has suddenly released voice assistants for doctors, जो अब पिछले 1 1.5 साल से कर रहे हैं. And then उसकी story फिर Forbes cover करता है. What do you see? Like, how does it यार validate दर्द our work? दर्द होता है कि भाई हम लोग जो आप अभी चमका रहे हो वो, और पता है जो चीज अभी लॉन्च हुई है, दैट इज नॉट एक्चुअली रेडी टू गेट इनटू द मार्केट. It is not ready to get into the market. और अभी हम Usability ही लोग, नहीं है यार. हमारे जब डॉक्टर्स उसको यूज करके प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं ना, और जब उसको पीपल, आई स्टिल रिमेम्बर एक साल पहले जब वी पिच टू दैट सर्टेन इन्वेस्टर, एंड वो केस में जब उसने बोला कि यार ये वॉइस वाली चीज तो कोई अडॉप्ट ही नहीं करेगा. वही. उसके बाद And में it's not just that इन्वेस्टर ने person. बोला. A lot of people said it. Even doctors themselves जो अभी voice use कर रहे हैं, they said कि मैं voice use नहीं करूंगा. And then suddenly, apparently, पता नहीं क्या switch हुआ. And then because I also don't know what happened. They started using the voice वाला feature, and then they got so hooked up with it that because there's a convenience to it. You can do both voice and typing and transcription. सब कुछ एक साथ चल रहा है, तो it works together. Uh, and these are all very very old, very senior doctors, very they're not very tech savvy, but they're still able to use their phones, they're still able to use their laptops, tablets.
for making principles. It's हम्म, very interesting. But हम्म, वही यही चीज है कंपटीशन. एंड देन व्हेन यू सी कि अच्छा मार्केट के अंदर कोई चीज सडनली आ रही है, इसको हाइप मिल रही है बिकॉज ऑफ इन्वेस्टर मनी, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर, एंड देन वी आर रनिंग हम्म. बूटस्ट्रैप्ड एंड वी आर रनिंग with whatever funds we got from family and friends. How do you see this thing scaling up? What do you see in like what are the numbers today and what do you see in 6 months? यार since I'm leading the business, I won't actually be ready to share some numbers here. But guys, if let's suppose if we are at 10% of our actual potential, we would be achieving about 150% of our actual potential in next 6 months, down the line 6 months. With respect to tech, with respect to revenues, with respect to the partners that we have, with respect to the companies that we would be collaborating with, or maybe the clientele that we have right now. So actually, as of now, we are tackling to type B of hospitals a lot, right? जो स्टैंड अलोन 150 बेड्स है या लेट्स सपोज स्टैंड अलोन रेप्यूटेड डॉक्टर्स हैं या रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स हैं, वी आर एंटरिंग दैट. But as you know, down the line 6 months, we have good plans in the pipeline. We have Hmm. good names in the pipeline that we would be materializing. So as and when that is done, obviously एक और podcast करेंगे जिसमें मैं सारी चीजें अच्छे से highlight करके बताऊंगा, white board in it. But right now, you know, can you please ask me some specific question about this? तो मैं थोड़ा मे बी घुमा फिरा के बता पाऊँ. ठीक है, तो बताना है. तो लेट्स टॉक अबाउट सिटीज. नंबर ऑफ सिटीज दैट वी आर इन राइट नाउ. So दैट गिव्स अ वेरी थोड़ा गुड रफ आइडिया. हाँ, so थोड़ा context दे देता हूँ मैं. I started the whole outreach in a good way from last 2.5 months. In last 2.5 months, I individually have covered about 12 to 18 cities. हर city में एक reliable partner है. About we have a good amount of team members, very experienced team, set of members that we are working with. So मैं अपना टूर पहला टूर से स्टार्ट करता हूँ. सो आई स्टार्टेड माय टूर विद मुंबई. मुंबई में जितने भी हॉस्पिटल्स थे, जितने भी B2G वाला पर्सपेक्टिव था, आई कवर्ड दैट. देन आई मूव टू दिल्ली एंड NCR वाला रीजन, जहाँ पे फरीदाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली पूरा एंड नजफगढ़ वगैरह साइड वाला पूरा कवर किया था. वो दिल्ली NCR in itself is actually about a pair of 5 to 6 cities or more than that. So we covered that. Then from there I moved to Rajasthan. So Rajasthan में अलवर, अजमेर, गंगानगर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, उसके अलावा जयपुर वाला पूरा बेल्ट. सो एक्चुअली राजस्थान में देखा जाए तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ एन पार्टीशन, राइट? सो एक सेट में आता है पूरा जयपुर, एंड एक में आता है पूरा जोधपुर एंड जैसलमेर वाला रीजन. So we have covered the both of the belt. Apart from it, we are having a good amount of request and good acquisitions from MP as well. Um, some good people are taking a lot of interest from the MP side. MP में आप जाओ, इंदौर है. Actually Indore is a home ground for a lot of our team members. Yeah. But so that is one thing. But इंदौर इज एन इम्पोर्टेंट सिटी. इंदौर हुआ, उसके बाद में भोपाल एंड रिलेटेड सिटीज. यूपी में वी हैव सीन अ गुड अमाउंट. सो आवर फर्स्ट इनबाउंड लीड वाज फ्रॉम कानपुर. सो Hmm. कानपुर, वाराणसी, उसके अराउंड सिटीज, लखनऊ And I वगैरह have वी no हैव सीन. idea how that happened. So I had my the number that they called, the company number was with me. So I am suddenly getting a call 11:30-12 in the middle of the day, and कानपुर से कोई बोल रहा है. मैं कानपुर से कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं? And I don't even know कि आज तक नहीं समझ आया मुझे नंबर मिला कहाँ से उनको. Although we have the डू number website and all. हमने जब अपना फॉर्म लॉन्च किया था, एंड देन हाँ वी गॉट एब्रप्ट अबाउट 30 रिक्वेस्ट, जिस पे मैं कॉल कर रहा हूँ. हाँ भैया, हाँ ये तो हाँ नंबर हाँ. हमारा है ही नहीं. अरे तो दिस इज वेरी इसीलिए हमने फिर वो फॉर्म बंद भी कर दिया.
But We tried out every single form of inbound के methods. We've tried out Google Forms, we've tried out different Tally forms, we've tried out Calendly का पूरा link ही डाल दो कि जब schedule करनी है करो वहीं website पे ही। And आते भी थे, दिन के 4 मीटिंग्स हो रही होती है, बट वही चीज है कि कितनी उसमें से रियल होती है कितनी नहीं होती, कितने लोग वैसे से टेस्ट कर रहे हैं। यू गेट अ गुड एस्टिमेट ऑफ actual analytics with it. It is very hmm, interesting how much data you get on the engagement that your website is having, the amount of information you get. hmm, So I am all about data. So I am getting hmm, I have a person in the team who's hired specifically for creating very weird charts of data. insurance companies. Data ka pura of Hmm, creating charts and Power BIs of insurance companies, market trends. उनमें से बहुत अभी यूज भी हो रहे हैं। कोई मीटिंग हो रही है उससे पहले वी आर ओपनिंग दैट एंड वी आर चेकिंग अच्छा ये चीज हो रही है। तो आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय द डेटा वाला एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। So when we talk about data, when we talk about expanding and getting into places, एक चीज जो हमेशा एक रोड ब्लॉक बन के आती है बहुत लेवल्स पे, इट इज इंश्योरेंसेस। एंड इंश्योरेंसेस के अराउंड जितने सॉल्यूशंस इस टाइम पे बन रहे हैं या एग्जिस्ट करते हैं, दे आर ईदर टारगेटिंग अ नॉन मार्केट इन माय ओपिनियन। You can tell your opinion as hmm, you move forward, but in my opinion, they're either targeting a non market, or they're targeting a problem which does not actually exist, or they're targeting a problem which is too niche and it is very good, but it is too niche for the insurance company itself. So they're directly talking to the insurance company. यहाँ पे ना मेरा वो आ रहा है स्टैंस कि वो hmm, थानोस का सीन आता है ना, आई डू इट माई सेल्फ वाला। hmm, hmm, मेरा ना ऐसा काफी टाइम से, पिछले ऐसा 2-3 महीने से ये चीज चल रही थी कि if nobody is solving insurances for hospitals, let me try वाला चीज। hmm. Although we are very deep into overall easing the entire system for the hospital and all, it's a part of the entire thing. तो what do you say, मैं ऐसा एकदम लाइव पूछ रहा हूँ तेरे से, So इंश्योरेंसेस पे फॉर So हॉस्पिटल्स। actually, मैं पहला वाला सवाल क्लोज करता हूँ. Our presence in different cities. So हाँ priority one पे है अपना you know महाराष्ट्र, MP, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा and Delhi NCR वाला पूरा region. In P2 we have Andhra Pradesh, Telangana, that is the Hyderabad वाला पूरा region, and then we have Gujarat, and then we have UP and all. So that is our presence in the states, specifically cities में यार बहुत बड़ा market है. City wise बताऊंगा तो बहुत time लगेगा, but these are the states. हाँ Apart हाँ from it, these are the states जहाँ से हमें अच्छी खासी query आ रही है. So if we keep aside Assam and West Bengal, which is also in good state with respect to the leads that we are getting. But on to the second question, insurance wala perspective. So yeah, actually speaking, so there, like कैसे बताऊं मैं, हेल्थ केयर में जब हम लोग हेल्थ केयर बात करते हैं, ठीक है, सबको पता है हेल्थ केयर में पैसा है. सबको मालूम है कि इंश्योरेंसेस में बहुत ज्यादा there is a lot हम्म of revenue you can get from insurance part. But जो आज तक का हमारे रीजन का पर्सपेक्टिव है, दैट इज some of the founders that they see insurance वाला part is from the aggregation वाला मॉडल का पर्सपेक्टिव. हम्म एंड अपार्ट फ्रॉम इट, आज से 10 साल पहले का अगर स्टैंड देखोगे, आज से 5 साल पहले का भी स्टैंड देखोगे, so the insurance company was very closed thing, right? It was a very closed ecosystem. So हम्म insurances insurance companies and TPAs wanted to have the full control to their hands, right? हम्म Now that is a shift that we are seeing, like from insurance company having the full control, from the user having the full control. So हम्म अभी लोगों को पता चल गया कि हाँ यार, हम लोग अपने पोर्टल पे जाके लॉग इन करके देख सकते हैं कि हमारा BSI कितना है, बेस सम इंश्योर्ड कितना है. उसके अलावा लोग देख सकते हैं कि हमारी कितनी अच्छी पॉलिसीज है. पहले 5 साल पहले अगर आप देखते या 10 साल पहले देखते, तो देयर यूज्ड टू बी सम भैया इन आवर फैमिली जो हमारे सारे इंश्योरेंसेस मैनेज करते थे. But now हम्म we have full-fledged professionals that are into broking, that are into consultancies of the insurances, not just health but different sort of insurances. And now people are trying to you know use this as a instrument to in terms of security, as instrument to save their incomes.
So basically, there is been a lot of awareness in the insurance part as well, from a perspective of D2C and from the perspective of uh, customers, or let's suppose a patient in terms of health insurance. But when we see this thing, तो जो 5 साल पहले जो एम था, राइट, कंट्रोल से लेके यहाँ तक यूजर को कंट्रोल देना, जो ये शिफ्ट हुआ है ना, ये बस माइंडसेट में चेंज हुआ है. Technologically there is a lot of things that we can work on. There is a lot of things that needs to be changed, uh, हम्म from uh, from waiting to, अगर पहले cashless was very difficult thing. Now it is like pre-auth पहले ही आ जाता है, you just admit to the hospital. From having a conversation with a broker कि भाई मैं एडमिट हो गया हूँ, reimbursement करवा दो, फ्रॉम टिल नाउ कि आप पूरा एप्लीकेशन पे देख पा रहे हो कि भाई आप सारी चीजें, आपकी जर्नी कैसी रही है हॉस्पिटल में. तो दैट इज बीन अ गुड शिफ्ट. जब हम लोग टेक की बात करते हैं एंड हॉस्पिटल का पर्सपेक्टिव लेते हैं, क्योंकि ये सारी बात हमने इंश्योरेंस कंपनी और उनके यूजर की बात करी. हम्म हॉस्पिटल health insurance plays a very important and vital role. And as एग्जैक्टली of now, still there is a lot of problem which hasn't been addressed from the हम्म hospital's POV. So that is, अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी के साथ में इम्पैनल होना है, so lot of tedious work that they need to do. There is a lot of mediators that they need to undergo from. डायरेक्ट अप्रोच करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इम्पैनलमेंट करने में बहुत दिक्कत होता है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ. बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि एक क्लेम, हम लोग डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, हम बात कर रहे हैं इन सब चीजों पे, एंड उसके बाद फिर क्लेम्स गेटिंग रिजेक्टेड बाय बिकॉज ऑफ दिस डिजिटलाइजेशन is a bigger हाँ. pain that we need to address. I mean, we are 50 minutes into the episode, so anyone Actually, who's it is nobody's no, actually it is watching. Huh? no, actually, it is not a waste, or let's say it is not a, मतलब कैसे बताऊं. देखो क्या होता है ना, जब आप एक क्लेम डालते हो, सो एज ऑफ नाउ यू हैव सीन द इंडस्ट्री फ्रॉम द हायर अप्स, राइट. You have the conversations with CEOs, you have had a conversation with MDs, right. uh, in the same way I've had such conversations. उनकी problems बहुत अलग है. But when you go to the hospital Hmm. वाला segment, when you have the conversation with a TPA, जो बंदा TPA संभाल रहा है, TPA desk संभाल रहा है, when you go हाँ, and look into the reality, the whole picture is very different. So, exactly. from fake claims to fake Yeah, patients, from fraud detection to fraud mitigation, things हाँ, are very difficult for the insurance company as well. exactly. So, what I think is companies like us, the emerging companies in the health tech, they should think about these things as well. So it is not about कि यार insurance company है, वो तो claim वही कर दे, reject ही कर देती है. There is a certain reason behind There's a that reason why they do segregation. that. Exactly. That's what we are also working on with all these Yeah. insurance companies every time. Pe. Be it whatever names, no names taken, but yeah, whatever collaborations they're having with insurance companies right now, with respect to the upcoming very interesting motions, very interesting initiatives. It is all mostly related to this. Ritesh, हाँ हाँ, you are visible, sir, or you're not. अच्छा.
Sorry. Internet and network issues. Gee, no worries. We are going to edit this part out anyways. We are going to edit this part out anyways, so it doesn't matter. Chalo. So, back to this. What we're talking. We're talking about insurance companies. Yes. So, Yeah. insurance companies के साथ जो collaborations अभी हो रहे हैं. मैं बताता हूँ मैं असली प्रॉब्लम कहाँ लाई करती है व्हाट इज द एक्चुअल गैप एंड व्हाट इज नीड्स टू बी एड्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू मी since I have been on the field um, from the very beginning of this whole सोच के engagement. बताइए भाई क्योंकि apparently there are a lot of people who are looking at this exact part where you're talking about insurances and you're talking about the So gap which is there. basically, from a POV of insurance company, there is LR बहुत बढ़ते जा रहा है, the loss ratio, जो health हाँ. reimbursement arrangement है, that is the HRA. ये दो हम्म. perspective insurance company के end पे are very important. क्योंकि अगर हम्म. आपका LR ऊपर नीचे हुआ, that is a set of a KPI जहाँ से आपका distribution hamper होता है. हाँ. हाँ. LR कब ज्यादा कम होता है जब आपके reimbursement या जब आपके claims बहुत ज्यादा आ रहे हैं. और अगर आपके Exactly. क्लेम में फेक या लेट्स सपोज फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज चल रही हैं दैट इज वेयर योर होल चेन गेट्स अफेक्टेड so Yeah. that is the important part from the perspective of insurance company. That is the reason why digitalized prescriptions, digitalized notes. So just to give more insight and just to give more context of the whole conversation. So आप अगर prescription digitally लिख रहे हो that is not an issue. Yeah. अगर आप आईपीडी के टाइम पे अगर आप नोट्स आप नोट्स अगर डॉक्टर नोट्स नर्सेस का नोट्स डे इन डे आउट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अगर वो भी आप डिजिटली लिख रहे हो सो दैट डजंट गिव्स एन इंप्रेशन कि हाँ भाई सही में कुछ चीजें हो रही हैं सो देयर इज अ सेट एसओपी एज वेल इन दैट केस वो चीजें कई बारी रिजेक्ट हो जाती हैं अगर सारी चीजें डिजिटली लिखी हुई हैं Hmm. and I believe many of the insurance companies, for example, अगर मैं example दूँ, Echo वाले चीजें, Echo ले लो, या Go Digit ले लो, they Hmm. are working tremendously on this thing. So Absolutely, they are. We need to also call that out. That is very true. yeah, so Uh, shout out to Echo and Go Digit. But the point is, There are other उसके parameters with respect to that, though. There are many there are many other parameters we need to look at when we appreciate insurance companies. इंश्योरेंस कंपनी हमें सबके साथ कोलैबोरेट करना है shout out to IRDAI. True. But true, that is very interesting. The market as a whole, it's filled with, there's a statement. No hospital management system has won the market yet. No hospital management system has clearly addressed the problems properly yet. And that is why we're sitting here and we're having this conversation at all. Uh, but when you talk about being on the ground, individual regional players, which penetrated very early on and who had very good connections in their cities and all, they have kind of done some mark on digitization in both positive and negative end क्योंकि बहुत हॉस्पिटल्स को हो गया कि हमने एक सॉल्यूशन यूज करा था उसकी वजह से हमारे प्रिस्क्रिप्शन स्लो हो गए उसकी वजह से हमारा ओपीडी स्लो हो गया उसकी वजह से हमारा आईपीडी स्लो हो गया इसलिए अब हम कभी नहीं करेंगे ये भी एक पर्सपेक्टिव बनता है और दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी बनता है कि हम लोगों ने एक सिस्टम ले लिया है उसमें हमारे पास 15,000 20,000 50,000 पेशेंट पड़े हैं अब उसको हमें इम्पोर्ट करना है हमने दोनों चीजें टैकल करी है तो point is we're getting into this market in a very soft position and when people talk about building a company they usually talk about building aspect of it the tech aspect of it the harder aspect of it and a lot of times the real building aspect so market में हो रहा है वो neglect हो जाता है so that is why this episode where I wanted to have your story on it where I wanted to have what is the angle of you know Ritesh Sharma and the marketing, acquisitions, business aspect of things, वहाँ क्या building हो रही है? So यार as of now we are into like अगर हम लोग चैनल्स की बात करते हैं एक्विजिशन चैनल की बात करते हैं मार्केटिंग की बात करते हैं ब्रांडिंग की बात करें तो as of now we have started with a traditional stance of acquisition. We do have good references, quite a good references in the market, and that is the reason we have seen a lot of
acquisition in last few months. Apart from it, obviously we had a discussion about the PLG and PLS. So Yeah. product led growth is something that we are targeting right now. I had like just to give more insights on this thing. हम लोग यार ऐसी मार्केट में है जहाँ पे फ्रेगमेंटेशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. अपार्ट फ्रॉम इट, देयर इज नॉट अ वेरी सिंगल मेंटालिटी, एक मेंटालिटी लाई नहीं करती है मार्केट में. सो जब हम लोग पीएलजी की बात करते हैं, तो देयर आर फ्यू सर्टेन फैक्टर्स एज वेल. Hmm. एक स्केलेबिलिटी का फैक्टर आता है, एक फैक्टर आता है उतने बड़े मार्केट को एड्रेस करना. अगर आपका टाइम इतना बड़ा है, तो क्या आपका जो स्ट्रैटेजी आप पीएलजी में यूज कर रहे हो टू बिल्ड योर इनबाउंड फनल, इज दैट क्वाइट क्वालिफाइड? So Hmm. that is something that we are having our brains into. But apart from it, when we talk about our traditional set of strategies that we are implementing, it is on a good path and actually in the good hands. Uh, So that is something that we are working on here. But uh, एक यार चेंज मैं देख रहा हूँ, from working with the people जिनके पास में कोई experience नहीं था, um, from the tech perspective as well, from the operational point of view as well. So as of now, जब हम लोग operations की भी बात कर रहे हैं, तो it is you, me, Devansh, and Jashil, which are actually, and obviously the tech team. But apart from it, when hmm. we say about company's operational efficiency, so we are the ones who are actually taking things ahead. Uh, so from having no info or from having no insight onto कि भाई क्या query आएंगी, support में क्या क्या करना पड़ेगा, to आज having full-fledged information, documents, and most Hmm. important documentation on place. जब हम लोग वही सेम टेक की बात करते हैं, तो we got very very interesting comments. If you remember, we were in that garden and someone actually said कि यार आपके डेवलपर्स तो बहुत नए हैं, how would you actually Uh, address to this market? तो hmm. from there to actually And आज from वही there to developers are मतलब like probably in the entire market, if you have to put their you have to put a set a an experience level पे कि healthcare industry में अगर if you want developers, we have those people now. Even if you have trained them, even if you have built them, and obviously we're looking out for them as well, just as much. basically, there is a saying that not every nut is meant to crack, but the Yeah. nuts that we have. अरे पता है इस पॉइंट पे मेरे पास एक चीज और दिमाग में द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट यू एंड आई मेट यू विद one of somebody else as well who was in the company. The opinion and the understanding that we got was कि यार Ritesh uses too many technical terms. कि इस कॉन्वर्सेशन में भी कोई अगर सुन रहा होगा they'll also notice this thing कि from PCL to LTV to every single possible marketing term. And then the second point here for everybody is Ritesh is an engineer. And then the Oh, third thing here is that Ritesh is actually putting real impact on the business aspect of things in insurance, in healthcare, in all of these overall markets, especially in business and growth. So, what do you have to say on that? good question. So actually, कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली में देखेगा ना ये चीज, तो दे वुड बी क्वाइट एस्टोनिश्ड कि भाई करता क्या है ये. सो करता एक्चुअली क्या है ये? I've पता है asked. इंटरेस्टिंग बात बताऊं फ्रेंड्स एंड फैमिली की इंटरेस्टिंग बात है कि वी आर एट दिस पॉइंट इन द पॉडकास्ट जहां तक कोई नहीं पहुंचने वाला. मार्केट देने पड़ेंगे यहाँ पे आके सुनना. फ्रेंड्स एंड फैमिली, इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एक्चुअली इंजीनियरिंग ने यार एक चीज सिखाई. इट इज नॉट अबाउट, यार एक्चुअली देखा जाए ना, मतलब दैट इज वेरी रिलेटेड. I know. The thing is कि business is something that I'm very fascinated about. Uh, so if you consider sales, yeah, if you consider marketing, yeah, if you consider alliances or business transformation in totality, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ का नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा विदाउट ग्राउंड, विदाउट एक्चुअली बीइंग ऑन ग्राउंड, विदाउट एक्चुअली गेटिंग आवर हैंड्स डर्टी. कि हाँ यार ठीक है, फॉर्मल्स पहने हुए हैं, हाथ
ऊपर करो, स्लीव्स रोल्स करो और चलो भाई मीटिंग करता है. So that is a sort of an approach that you need to have. Apart from it, जो बंदा I have a friend that I used to work with. वो एक शब्द यूज करता था, जूझना. ठीक है. तो जो जूझना है ना, वो मैं बहुत दिनों से जूझ रहा था, with respect to acquisition. strategies build करना, try करना. So I've been there, I've done that, and that is what is actually helping us out in this whole journey. So health tech and True. insurance के बारे में the important and very fascinating thing is, अगर आपने सही में ये इंडस्ट्री रेवोल्यूशनाइज की, innovation is very less in this industry. Usually देखा जाए तो the average age of people that we have in this industry is between 40 to 60, or 35 to 60. So yeah, yeah, they focus on the efficiency wala part. They Yeah, focus on transforming the existing SOP that they have rather than changing the whole SOP itself. exactly. They So want something which sits in their SOP. They want yeah, what they can use, yeah. not So something that they'll have to mold around. yeah, so वो चीज है. तो वहां पे अभी यार देखो, एग्रीड कि हमने जो अभी अपना इकोसिस्टम है वहां पे वी हैव वर्कड अराउंड द सिंप्लिसिटी वाला पार्ट. अगर आप पॉडकास्ट वन देखोगे अपना, एंड देन इफ यू एक्चुअली इन दैट होल पॉडकास्ट, आई लाइक द ओनली द वन स्टेटमेंट दैट आई सेड. यार लोग कहते हैं कि सिंप्लिसिटी ये क्या है, दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग. बट जब आप बिल्ड करने जाओ, आपको पता चलेगा क्या है. सिंप्लिसिटी को डिफाइन भी करना होता है आपने, अगर सिंप्लीफाई करना है तो. इन मैं दैट ये पॉडकास्ट का ये वाला जो पार्ट है आयुष को भेजूंगा कि नितेश ने बोला कि सिर्फ एक ही पार्ट अच्छा लगा पूरे पूरे एपिसोड का। नहीं, बट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि यही चीजें हैं यार जो मैटर Implication. करती Very interesting. So, anything else that you want to add? Anything you want to ask? Anything that you want that whoever is watching this and whoever has इतनी तपस्या करके यहाँ इस पॉइंट तक पहुंचा है इस पॉडकास्ट के है. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अटेंशन स्पैन अटेंशन स्पैन को साइड में रख के but यार honestly speaking, there is a very long way to go. The idea that you have and the idea that I have with what we want to build here, it's not just hospital automation, it's not just healthcare automation. It is much, much, much larger than that. हाँ. So yeah, obviously we are just getting started, and actually we are Exactly. just so there is no point of having such discussions कि आज से 10 साल बाद में 6 साल बाद में क्या होगा. We Exactly. just That's know what we're not discussing. यहाँ तक आया तो उखाड़ तो लेंगे यार. But the point is Ah, कि um, there is a long way to go. There is a whole different set of problems that are need to be addressed. मैं पॉडकास्ट से शुरू होने से लेके अब तक एक ही चीज पे बोल रहा हूँ कि देयर आर वेरी बिग प्रॉब्लम्स इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इन द वर्किंग ऑफ द टीपीएस एंड द इंश्योरेंस कंपनीज, इन द हेल्थ केयर इकोसिस्टम, विद डॉक्टर्स, विद नर्सेस, विद द नॉन पैरामेडिक स्टाफ, विद द पैरामेडिक स्टाफ, विद जिसको रिस्पेक्ट टू द. जिसको हाँ. you cannot solve them without actually getting into their heads, without actually shadowing them. Tech needs या. to shadow them first, and then they can actually optimize the workflow. तो इट इज एक्चुअली अगर आप कोर देखोगे, कोर सोल्यूशन देखोगे ये चीज का. सो इट इज एडवाइस टू एवरी स्टार्टअप दैट इज बिल्डिंग अराउंड हेल्थ केयर. सो यार एज एन स्टार्टअप हो ना, इफ यू आर बिल्डिंग थिंग्स अराउंड टेक, यू वुड बी थिंकिंग कि यार हमने अपना टेक को आगे रखना है. इट इज नॉट अबाउट दिस थिंग यार. इट इज अबाउट हाउ हाउ एफिशिएंट एंड हाउ, लाइक इफ यू टॉक अबाउट एफिकेसी एज वेल, तो वो दोनों चीज को आप कैसे एड्रेस कर रहे हो. एंड इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट बीइंग ऑन टू द फ्रंट, इन द फ्रंट, एंड झंडा आपके हाथ में लगा हो जरूरी नहीं है. यू शुड बी द वन हु हैव बिल्ड दैट फ्लैग. सो दैट इज द एम दैट मीडॉक हैव राइट नाउ. यार ठीक है, प्रॉब्लम भले हर जगह मीडॉक ना चमके, बट प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट ह्यूमन के दिमाग में रहेगा कि हाँ, मीडॉक वाज द वन हु ब्रॉट दिस थिंग वेरी इनिशियली. So the same Exactly. thing is with the different that we are starting with. That is the service segment of the insurance companies. That is with the funding wala part. But apart from it, as a startup consultant advisor, acquisition में जो भी हूँ मैं. Point is कि uh,
like don't see like macros from the perspective of the micro. See micros as a perspective of macros. So हम्म that is something that people need to focus on. इस पार्ट को हम लोग एडिट So करके अच्छे से उसको कोई भी प्रॉब्लम, विल मेक अ हाईलाइट सॉरी मतलब मेरा पॉइंट यही है कि यार आज की सोच लोगे, कल की सोच लोगे, आज से 5 साल डाउन द लाइन सोच लोगे, वो आपका कंपनी बना लेगा, आपका वैल्यूएशन बना लेगा, आप कंपनी बेच सकते हो, आप रेवेन्यू बना लोगे. बट इफ यू आर कंपनी में इन स्टार्टअप्स देयर आर टू पर्सपेक्टिव. अभी अगर बिजनेस की बात करें, देयर आर कंपनीज हु एक्चुअली मेक वैल्यू एंड देयर आर कंपनीज हु हम्म जस्ट मेक द वैल्यूएशन. इट इज ऑन टू यू कि आपके प्रोडक्ट को आपने वैल्यू ड्रिवन बनाना है या वैल्यूएशन ड्रिवन बनाना है. आपने फंडिंग उठा के कंपनी हम्म एग्जिट, या आपने बूटस्ट्रैप, कोई भी पर्सपेक्टिव, या फंडिंग उठाओ, गलत नहीं है. If that वही is actually if it is actually boosting your trajectory of the growth, it is not wrong. एग्जैक्टली ठीक है, बाय बाय. So the point is कि कौन से वेज में आप अपनी कंपनी का स्टैंड्स देखना चाहते हो. Before raising any funds, this is something that every founders needs to एंड focus on. all this goes, all your every single startup advisors and all the social media thing, it all goes into the side tracks. When you think about the fact that if you are running a company, the only thing you need to do is surviving it first, making it stand on its own self, and then you think of everything. If it takes a good valuation, go for that. If it takes a good product, build it. If it takes a good MVP first, build it. If it takes funding, take it. Or whatever you need to do, you need to first of all understand ki, you have to be all in, and you have to be all in on survival. And you have to be all in on that instinct ki, to survive, we need to ensure that things are sustainable. And sustainability does not come without good business, without good problem solving, without good revenue streams, without good incomes. अगर 0 to 1 की जर्नी खुद ने जी है ना आपने, if you have been to that, you have done that 0 to 1, देन कि यार अगर एक पे पहुंच गए ना, वहां से 100th लेवल तक स्केल करने में इट इज नॉट अ वेरी बिग चैलेंज. इट Hmm. इज जस्ट अ चैलेंज अबाउट, जैसे हम अभी मिडॉक की भी बात करें तो आवर वेरी फर्स्ट चैलेंज वाज ऑनबोर्डिंग आवर फर्स्ट हॉस्पिटल. उसमें 110%. जितना टाइम एक हॉस्पिटल को लगा, उतने टाइम में उसके बाद 5 हॉस्पिटल हुए. और उससे ज्यादा एक्चुअली पॉइंट वही होता है कि जस्ट फोकस. जैसे मैंने बोला, जैसे उत्कर्ष ने पूछा था कि मिडॉक का स्टैंड क्या है, और जैसे मैंने उसका आंसर दिया था कि यार ये टाइम पे इकोसिस्टम अपना स्टार्टअप का है. वी आर नॉट एक्चुअली मे बी एन एमएनसी और एन एसएमई. मेरा फर्स्ट फोकस रहता है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, कि भाई सरवाइव करना है. उसके बाद में जैसे भी रेवेन्यूज आ गए, देन यू आर ओपन टू एक्सप्लोर योर कैनवास. यू कैन एग्जैक्टली पेंट एनी. एग्जैक्टली. बट पहले कैनवस ले तो लो. कैनवस ले लो जितना तो हो. Oh, I mean, like I meet a lot of startups. So they are like, sir, ये problem है, and this is the way I want to approach it. मतलब, okay, sir, funding चाहिए उसके लिए. मतलब यार क्या किया उसके लिए, मतलब obviously इन्वेस्टर है आजकल, तो आइडिएशन स्टेज पे भी आपको फंडिंग मिल जाती है, सीड प्री सीड राउंड पे. बट द पॉइंट इज वो कितना लंबा टिकेगा अगर आपके पास में कोई सेट फनल नहीं है तो. Exactly. Funding is not negative here. We're not trying to make it the problem here. It's about the fact ki what do you do with it, and how are you looking at that money. We have very interesting insider things on how we look at money and how money needs to be fluid, and it needs to be thought of like something which is flowing. Otherwise, if you just keep, if you try to hold it in your hand, it becomes a problem. All of those things are there. But then again, in the end, that is not the scope of this podcast. The scope of the podcast was mostly around building Medoc. It is around the fact that the market plays a very important role, business plays a very important role, and you have to get down to the most the most minor stakeholder of your idea, एंड उनके साथ बैठ के उनको शैडो करना पड़ता है. तो मैंने स्टार्ट करा था, आई इंटरव्यूड 150 हॉस्पिटल्स. when you started, you interviewed 200 hospitals. When anybody, we went into the market, we actually talked to people. अभी जैसे स्टार्टिंग में यू said in this podcast कि you went to a hospital, जल्दी पहुंच गया, पेशेंट से बात कर ली, एंड वहां पे यू were getting insights.
Similarly, I go to civil hospitals, I look at these hospitals and I look at whatever is happening there, उनके doctors के क्या struggles है, उनके systems में क्या loopholes है, वहाँ क्या leaky buckets है, and then we get insights there. We see कि अच्छा कोई conversation में एक छोटी सी चीज भी पकड़ के आ जाती है ना, तो वो चीज पकड़ के उसके ऊपर question करना and asking the right questions is where actually businesses are built. Hmm. This is a great conversation, Ritesh. Now you have a business to run, and I also have protocols to create. Great conversation, great. It was यार ये पॉडकास्ट ना हर हफ्ते करो यार कम से कम बैठ 3 मिनट बात करने का हाँ, सच में यार। नहीं, बट सही है, बढ़िया है। चलो, ओके, let's stop the. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर यार एट दिस पॉइंट जो अभी वाला पार्ट सुन रहा होगा ना, वो ऑलरेडी वैसा स्किप करके यहाँ आया हुआ है, तो वो वो पीछे उसको जाओ थैंक यू पीछे नहीं जाओ बोल पीछे जाओ पूरा सुनो रहे। चलो, ओके। ठीक है ओके रिकॉर्डिंग बंद कर दी हाँ, अब कर दी।